Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know that at 11 a.m. from Sunday to Thursday we discuss the Hindu analysis. आज 13 September है, today is 13th September and we are here with today's the Hindu analysis by me Salik Ahmed. So if I am audible and visible, yes. Okay, yes, good morning everyone. So let's start. Today is Tuesday. आज Tuesday है, 13 September है. So let's discuss important articles that were there in today's The Hindu. So first is Hindu women's suit in Gyanvapi case maintainable, says court. This is an article which we are discussing. ये वाली article हम लोग discuss करेंगे. Then this is an article, retail inflation resurges to 7% as food prices mount. Industrial output growth in July drops to 2.4%. तो आप लोग ये भी जानेंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो तेजी से 7% के ऊपर चला गया है, इसलिए कि फूड प्राइसेस माउंट मतलब होता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड माउंटेन. माउंटेन का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, है ना? सो इट मींस द फूड प्राइसेस आर गोइंग हाई एंड बिकॉज ऑफ व्हिच द रिटेल प्राइसेस हैव गॉन to 7%. So we will be discussing about these two in detail. Now, first let's discuss about it. I hope you are aware. Basically, simple thing, you all are aware about Gyanvapi. It is in Gyanvapi Mosque. You will find in Varanasi. So, Varanasi District Court on Monday dismissed an application filed by Anjuman Intizamiya Masjid Committee challenging the maintainability of suit filed by 5 Hindu women seeking the right to worship Hindu deities within the Gyanvapi Mosque premises all year round. And it further says it's confined to right to worship, not conversion of mosque to temple. इसका मतलब शॉर्ट में ये समझ लो कि अभी ये केस चलेगा, मतलब इस पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया गया है कि जो 5 हिंदू वुमेन ने पिटीशन डाला था कि जो मॉस्क की प्रेमाइसेस है उसमें वर्शिप करने दिया जाए हिंदू डाइटीज को पूरे साल भर के लिए, ठीक है. And the court has said that this issue is about it's about right to worship and not about conversion of mosque to temple. यानी कि ये वो वाला मामला नहीं है कि मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किया जाए, रादर ये सिर्फ इसकी बात हो रही है कि क्या उस प्रेमाइसेस में वहां पर ये इशू को डिस्कस किया जाएगा कि उसकी प्रेमाइसेस में हिंदू डाइटीज को साल भर इंटायर ईयर वर्शिप करने दिया जाए कि नहीं. दैट इज व्हाट द मेन आर्टिकल सेज. ओके, नाउ बट बिफोर दैट इन द सेम आर्टिकल एक्चुअली 1991 act is being mentioned. That's called as place of worship act. ठीक है, ये यहां चला गया नीचे, इसको करेक्ट कर. place of worship act 1991 actually. In this article it is being discussed. इस article में place of worship act 1991 mentioned है. Okay, so it says the place of worship act 1991 sees the religious character of all place of worship as it stood on X. What is X? You have to tell me. And these are your options. आपके सामने ऑप्शंस है कि 1991 का जो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो रिलीजियस कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट एक्चुअली इसी आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है. द सेम आर्टिकल दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड. सो मेजॉरिटी आदिति, आयुष, अस्मिता, लक्ष्मी, नांशी, शुभम, गीतांशी, सोनल उपाध्याय, प्रीति, आहाना, गीतांशी, ऑल राइट. इट्स 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 का डेट फिक्स करता है. So basically, it says that whatever was there on 15th August 1947 will remain like this. So if something was a masjid, it will remain a masjid. Something was a mandir, it will remain as a mandir. Okay. So we are not going to go in detail कि previously whether it was a mosque or a temple and all. That is what it says. ठीक है. तो ये कट ऑफ डेट दिया गया इसमें कि इस दिन जो मंदिर था वो मंदिर था और जो मस्जिद था वो मस्जिद था, या कोई और रिलीजियस टेम्पल या रिलीजियस कोई और भी चीज था तो वो ही रहेगा, उसका वो चेंज नहीं किया जाएगा हिस्ट्री में जाके देख के, ठीक है. सो दैट वाज द 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट टॉक्ड अबाउट. सो इन द सेम आर्टिकल एक्चुअली दिस ऑथर हैज डिस्कस्ड इट. कृष्णा चौधरी प्लीज रिफ्रेश इट, दोबारा आप ऑन करो चला के, है ना. ओके, so why I'm saying so, because this type of question, exact dates, है ना, these types of questions were asked in the last year CLAT exam. If you see, Sheikh Mujibur Rahman was assassinated on 15th August 1975. These types of questions were asked. Last year there was this question also, है ना. So what is the right answer to this question? कोई बता सकता है? So they are asking, last year question they asked exact dates, है ना. So let's say even if you know the 1948, let's say if you know the year, still it is not enough because they were expecting you to know the exact date. तो आपसे ये पूछ रहे थे
कि एग्जैक्ट डेट आपको पता है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, कि वेदर यू नो द एग्जैक्ट डेट सिंस इट इज इन न्यूज, है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. सो दे कैन आस्क दिस question. What is the right answer? Yes, here the right answer is C, 10 December 1948. Good. Debadrita, Lakshmi, Anushka, Ayush, you all are right. Nancy. So that is what we are highlighting, the important exact dates also. इसीलिए मैं exact dates को भी highlight करता हूँ. Yes, है ना. Okay, so the article District Judge A.K. Vishvesha said that neither Place of Worship Act nor Waqf Act nor UP Sri Kashi Vishwanath Temple Act bar the suit that the plaintiff will have to right to prove their avertments by cogent evidence and all. Bar the suit मतलब stop करता है, यानी कोई सा भी ऐसा कानून जो stop नहीं करता है कि जो plaintiff है, यानी जो petitioner है, plaintiff means petitioner, है ना, वो ये पेटिशन नहीं फाइल कर सकते. मतलब उनको मतलब कोई ऐसे बार नहीं है, यानी रोक नहीं है कि वो जो है अगर उनके पास एविडेंस हो तो वो मतलब प्रूफ करे कि उनको रिलीजियस प्रेयर का राइट क्यों मिले, एटसेट्रा एंड ऑल. सो देयर इज नो स्टॉपेज टू दैट. दैट इज व्हाट डिस्ट्रिक्ट जज सेज. तो वो सूट जो है, वो नहीं, जो केस है वो चलेगा अभी. ओके, दैट इज व्हाट इट सेज एंड ऑल. सो दे हैव गिवन द पेटिशनर्स हैव गिवन देयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन व्हाई दे वांट यू कैन से टू वर्शिप इन दैट यू कैन से प्रेमाइसेस. ठीक है. The 1991 Act sees the religious character of all places of worship as it stood on 15th August 1947. ये से मैंने क्वेश्चन उठाया. This is very very important. Okay, ठीक है. The court noted that the suit filed is limited and confined to the right of worship as a civil right and fundamental right as well as customary and religious right. The court emphasized that the suit neither sought a declaration nor injunction over the property in question, nor did it seek to convert mosque into a temple. तो ये कहा जज साहब ने कि ये पिटीशन इसलिए नहीं फाइल किया गया कि मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इसलिए कि राइट टू वर्शिप उस रीजन में, उस प्रेमाइसेस में राइट टू वर्शिप का अधिकार हो. दैट इज व्हाट द जज हैड सेड. ओके, इज इट क्लियर? यस. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर आर्टिकल व्हिच वाज देयर इन फर्स्ट पेज. ये वाली जो है ना, दिस वन, रिटेल इन्फ्लेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. Retail inflation resurges to 7% at food prices mount. देखो, माउंट ऐसे याद रखना, वर्ड्स वोकैबुलरी रिमेंबरिंग में आसानी होती है. माउंटेन, माउंटेन मींस एनीथिंग व्हिच इज एट द टॉप, है ना, ऊंचाई के कोई चीज. सो फूड प्राइसेस माउंट मतलब इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 7% चला गया, जैसा कि क्यों, इसलिए कि फूड प्राइसेस यानी खाने का दाम बहुत तेजी से भाग गया. सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. बट बिफोर दैट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट आंसर दिस, then we'll be discussing further. The question is, what is the upper limit set by Urjit Patel Committee on Inflation target? 6%, 4%, 2%, 5%. Inflation targeting में कुछ बैंड यानी कुछ लिमिट बनाया गया है. ठीक है. So there's a lower limit, there's a upper limit. So I'm asking, what is the upper limit set by Urjit Patel Committee that we should not cross this limit? So what is that? बहुत कम आंसर लोग. हाँ, यस, गुड गुड गुड. हरिओम, अस्मिता, सोनल, देबाद्रिता, साक्षी, प्रीति, यू ऑल आर राइट. द राइट आंसर इज 6%. यस गाइज, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. एवरीवन, वी आर सीइंग वेरी लेस लाइक्स. सो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो अपर लिमिट सेट बाय उर्जित पटेल कमिटी रिकमेंडेशन टारगेट इज 6%. ठीक है. तो अगर आप देखोगे केयरफुली, सो दिस इज द 6% टारगेट, राइट, है ना, ये वाला होगा ना, दिस वन. So this, in this region, it has crossed that limit. ठीक है. So 7% is above 6%, of course. India's retail inflation resurged to 7% in August from 6.71 in July and fueled by 7.62% uptick in food prices paid by consumers. तो कारण ये है कि फूड यानी खाने का दाम बहुत तेजी से भाग गया है. इसके कारण रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है ना, एक होलसेल इन्फ्लेशन होता है जो होलसेल मार्केट से रिलेटेड होता है. रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो डायरेक्टली यू गो एंड बाय फ्रॉम द शॉप्स, रिटेल शॉप. सो दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि 7% को अगेन से अराउंड आ गया है ना. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज. ओके, यस, दिस इज द 8th successive month that retail inflation has stayed above the central bank's upper tolerance limit of 6%. ये लगातार आठवां महीना है जिसमें 6% से ऊपर इन्फ्लेशन भाग गया हो. ठीक है. The upper limit 6% has crossed. This is in the last 8 years, continuous 8 years, this has been seen. Okay, combination of buoyant inflation and a tripping industrial recovery, etc. and all. That is what it says. Yes, combination of buoyant and इसमें detail में वो they have discussed a lot of things and all. ठीक है.
you are not supposed to go very much in detail. Just have one question. Can anyone tell me what is 1 basis point? कोई बता सकता है? 1 basis point is what? Anyone? कोई बता सकता है 1 basis point कितना परसेंटेज होता है? It is equal to how much percentage? 1 basis point, this was mentioned in the article, is equal to x%. What is x? Anyone waiting for your answers? जा किसी को नहीं पता. Yes, हरिओम अवध is right. Good. It is equal to 0.01%. ठीक है. Yes, Chandani is also right. Aditi Agarwal is also right. Good. So 1 basis point is 0.01% होता है. देखो यहाँ लिखा हुआ अभी. Let me show. हाँ है ना. So these are let's say it's written like this कि inflation has risen by 35 basis point. So when I say let's say 35 basis point BPS, 35 basis point, it means 0.35%. ठीक है. So that is what you are supposed to know, that what is 1 basis point, it is equal to 0.01% and all. ठीक है, इसी को उन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया है. Okay, yes. Let's discuss about another article which was there in the first page, talking about Eastern Borders Stable Commander. India China disengaged from PP-15 in Gogra Hot Spring area. This is very very important. ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था. You remember PP-14 was asked last year in CLAT. Why? Because PP-14 was what? Galwan Valley region. So they asked that Galwan Valley clash happened in which region? So the answer was PP-14. जो पिछले साल सवाल आया था वो ये आया था कि जब गलवान वैली क्लैशेस हुए थे तो कौन सा पेट्रोल पॉइंट था? तो पेट्रोल पॉइंट 14 था, है ना. This time they are asking PP-15, that is patrolling point 15 in Gogra Hot Spring area. Okay, that is what it says. So it says the situation along the line of actual control in Eastern Theater has been stable and no major changes or palpable shift of stance has been noted since the standoff in Eastern Ladakh, says you can say Eastern Army Commander Lieutenant General R.P. Kalita. Okay, there were reports of continuing infrastructure development sector, etc. and all. So basically आपको ये समझना है. So let's say this is, let me make the rough map, and it's something like this. So this region is a rough sketch of LAC, line of actual control, right? So somewhere here you will find that PP-15, that Gogra Hot Spring area. उसी के आसपास I think यहीं पे कहीं पे you will find these areas like Demchok and all, Debsang, Demchok, है ना? Here it is. Somewhere here you will find Demchok, Debsang, etc. इसी के आसपास आपको मिलेगा, है ना? इसी region में. So that is what the process of a disengagement was completed on 12 September. तो 12 सितंबर को ये disengagement process complete हुआ है. So that is why they can ask this. This is important, very very, है ना? While on the friction of Debsang and Demchok remain to be resolved. यानी कि PP-15 वाला disengagement हो गया है. But Demchok and Debsang disengagement is yet to be resolved. यानी कि PP-15 जो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया है उसको में डिसएंगेजमेंट यानी कि टॉक्स एक तरह से कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन देमचौक या देवसांग एरिया में अभी भी टॉक्स पूरी तरह कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं हुआ है. दैट इज व्हाट इट सेज. यस गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. एवरीवन फटाफट, वी आर सीइंग 50 लाइक्स. तो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. यस. Okay, let's move on to the next one. But before that, there's a question for you. So question number 3, because there was an article talking about this. ठीक है, Citizenship Amendment Act was being discussed in the article on first page in the Hindu. एक आर्टिकल था Citizenship Amendment Act, उसमें ये सवाल आया था, उसमें ये टॉपिक था मेंशन. तो I am asking a question. Citizenship Amendment Act 2019 amends which of the following? Constitution, Citizenship Act 1955, Immigration Act 1983, none of the above. What is the right answer? I'm waiting for your answers. बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी. स्तुति, श्रेया, देवादिता, आशीय, चंदनी, अनुष्का, हर्षिता, स्तुति, सोनाल, पांडे, ahana, शर्मिष्ठा. Some people are saying C, but majority are saying B. Yes, Gitanshi, Khushbu, the right answer actually is B. Citizenship Act 1955 is the right answer to this question. तो क्या लिखा ना, Amendment Act, Citizenship Amendment Act. It means it is amending something. ये एक ऐसा कानून है जो कि कोई और कानून को
संशोधन कर रहा है, नहीं अमेंड चेंजेस कर रहा है, राइट? सो बेसिकली इट वाज अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 and that is why it was called as citizenship amendment bill. When it was a bill, it was called as bill, citizenship amendment bill. जब वो पास हो गया, it was called as citizenship amendment act 2019. Okay, this was very much in the news. I think 2-3 years back ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इसीलिए you should be knowing this. B is the right answer to this question. So this was an article actually on the second half of the first page. अगर आपने अखबार खोला होगा, सेकंड नीचे वाले हिस्सा में ये वाले आर्टिकल थी, सीए पिटीशन टू बी हर्ड ऑन अक्टूबर 31. 31 अक्टूबर से ये वाला पिटीशन हियर किया जाएगा. सीजीआई आस्क पार्टीज टू ड्रॉ रोड मैप, हाइलाइट्स इश्यूज, केस टू गो टू 3 जज बेंच. सुप्रीम कोर्ट फिक्स द हियरिंग इन 220 पिटीशंस. 220 पिटीशन फाइल किया गया अगेंस्ट सीए. सो चैलेंजिंग द सीए ऑन अक्टूबर 31 एंड सेड इट विल रेफर द केस टू अ 3 जज बेंच. तो 3 जज बेंच को ये वाला केस भेजा जाएगा जिसमें 31 अक्टूबर से सुनवाई होगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट सीजीआई हैड सेड. सो दैट इज व्हाट ही सेज आफ्टर हाइएटस ऑफ मेनी मंथ्स. मतलब क्या हुआ था कि इट वाज फाइल्ड 2-3 years बैक ऑलमोस्ट, but still it was pending in a court. So now he has decided to proceed with it. Means it should continue. Means the hearing should be done and judgment should be passed. So lawyers said petitions linking to CA with etc. Assam NRC sought to be different segments etc. The CA fast tracks. ये सब आपको पता होना चाहिए. We'll be explaining in paid classes in detail. But if you are not a part of paid class, you should go and read in detail about CAA. ठीक है, क्योंकि जब 31 अक्टूबर को हियरिंग होगी, so it will be coming in the news. You have exam on 18th December, है ना? जब 31 अक्टूबर को हियरिंग शुरू होगी तो अखबार में बार बार आएगा सवाल. तो जब बार बार सवाल आएगा अखबार तो में सवाल आएगा तो सवाल पूछे जाने की संभावना है, राइट? एग्जाम में. When on 31st October the petition will be can say heard, there will be a news related with that again and again coming. So when it will start coming in news again and again, chances of being asked in exam is higher, right? And that is why you should go and read about CAA. ठीक है, what is exactly CAA, what are the positive aspects, what are the criticisms etc. Go and read it in detail. ठीक है, by which process the citizenship is given. So it is given by citizenship by naturalization process. What does that citizenship by naturalization means? इसका क्या मतलब होता है ना? Then you can say 6 religious communities from 3 countries are allowed under it. Under which form of citizenship? कौन से वाले citizenship के अंदर मिलेगा? Naturalization, registration. What is citizenship by naturalization? What is citizenship by registration? इसको थोड़ा सा पढ़िएगा. देखो here it is written, है ना? Citizenship Act 1955 was meant to protect etc. and all. So that has been amended. तो इसको पढ़िएगा जाके. Second thing is NRC also you should be knowing it little bit, है ना? National Register of Citizens. Because CA and NRC was very much in the news. वो दोनों एक साथ न्यूज में कई बार आया था. So when CA is in news, they can ask questions from NRC also. So go and read in detail about, है ना? Yes. Okay. Now let's move on to editorials. So these are the 4 editorials, है ना? So generally these 2 are written by authors, है ना? जैसे मैंने कई बार बताया भी है. And these 2 are written by, these are nameless author, है ना? Nameless article. So basically when they are nameless article, they are written by editors or editorial board of the Hindu. It means it represents the opinion of the Hindu newspaper. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर वालों का ओपिनियन रिफ्लेक्ट करता है. यस लक्ष्मी, wherever I am teaching in the class. Yes, हाँ. In the paid classes, of course. हाँ. So let's discuss about this one. Bharat Jodo and Congress Jodo as opportunities. See, this was largely a political article. If you are interested, you can read it. There is a Rahul Gandhi's Yatra of Bharat Jodo. ठीक है, so the author has written, he is Shashi Tharoor, he has written about it. ठीक है, so देखो आपने समझना, अगर if Shashi Tharoor is writing about international affairs, let's say, then you should read that article. अगर शशि थरूर कोई इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं तब आप पढ़िएगा उसको, ठीक है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज से रिलेटेड राइटिंग, ठीक है, so you should read that also, that type of thing, especially whenever he writes about international affairs it becomes important. But here he is mostly I can say talking about his own political party's campaign and all, Rahul Gandhi's campaign. So if you are interested you can read it, but I don't find to be very important कि बहुत डिटेल में जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है, you can read by your own. It's talking about president election and all, so you can read, but I'm not discussing it. ठीक है, let's discuss about this. Yes, so here it is talking about 3 to tangle.
Now, I hope you are aware. In fact, yesterday also I had discussed about this F-16 fighter jet, है ना? So basically, it is talking about the Pakistan factor should not undermine India's close security ties with the US. So first of all, there is a question for you. Read this question carefully, then answer it. Then we will discuss the article. In which of the following groupings India and US is working on the same page? I2, U2, Quad, Free or Open Indo-Pacific, all of the above. What is the right answer? इसमें से कौन से ग्रुपिंग्स में इंडिया और यूएस जो है सेम पेज पर है? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेम पेज? ये सब वर्ड का मतलब समझते हो? सेम पेज का मतलब है कि दोनों के आइडियाज सिमिलर हैं या दोनों के इंटरेस्ट मैच कर रहा है ना, दैट्स कॉल्ड सेम पेज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द नेशंस मैच. यस, let me study Preeti, Shubham, Rakhi, Stuti, Muskan, Khushbu, you all are right. So basically in all the cases, I2, U2, both India and USA is part. Quad, both India and USA is part. Free and Open Indo-Pacific, of course, both the nations want. Basically, this is a direction towards China, right? That we need free and open Indo-Pacific. So basically, the author is saying this. The author यही कहना चाह रहे हैं that there are a lot of cases where India and US are on same page. Same page मतलब है कि हम लोग बहुत सारे इंटरेस्ट मैच भी करते हैं. So the F-16 issue should not, you can say, become the reason to have a bad relationship with USA. ऐसा नहीं हो कि जो F-16 के जो इशू है उसके कारण इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है खराब हो जाए. ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए. That should not undermine India's close security ties with US. That is what he says. F-16 का आपको पता होगा. I hope you are aware. See, I think many years back, if I'm not wrong, yes, I think in 2005-06 they had bought this F-16. Pakistan bought from USA. Then Pakistan wanted further F-16 fighters, but it was stalled by Congress. Congress means Parliament of USA, है ना? Stalled means blocked. तो वहां की पार्लियामेंट जो है उसने मना कर दिया था F-16 बेचने को पाकिस्तान को 2016 में. ओके, so it prohibited or stopped Obama government, Obama administration to sell this F-16 fighters to Pakistan. But Pakistan had bought many years back also some F-16. Now, इसमें बात ये है कि what is exactly happening is that right now the US is not sending F-16, but you can say some spare parts, hardware, software, etc. उससे related equipments है ना, you can say like this. So the USA is not selling the entire F-16, but some equipments, parts, etc. of worth rupees $450 million. India has raised some concern, etc. Yes, ये concern की बात है. Why? Because they can be using against us. For example, the author has given the example of Balakot airstrike. After that, Pakistan deployed the F-16 to target Indian military bases close to line of control. तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने F-16 भेजा था. So F-16 is the same which was sold by USA to Pakistan. ठीक है. So if USA will be selling, let's say, more to Pakistan, then it will be against India's interest. अगर यूएसए और F-16 बेच दिया या और एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दिया तो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. दैट इज व्हाट द ऑथर सेज. बट स्टिल द ऑथर सेज कि वी शुड नॉट यू कैन से हैव अ बैड रिलेशनशिप विद यूएसए. ये सब होने के बावजूद भी हम लोग को इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना है, यूएसए का, यूएसए से इंडिया का रिलेशन, इसलिए कि बहुत सारे केसेस में इंडिया और यूएस के आइडियाज या कैसे इंटरेस्ट मैच करते हैं, है ना. दैट इज व्हाट इट सेज. Okay, yes, everyone please press the like button. Everyone guys. So India and US have committed to deepening defense security cooperation, but the intelligence of Pakistan dampens the spirit. Trump administration had tried to hold Pakistan accountable, etc. है ना. तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश भी की थी पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, टेररिस्ट ग्रुपिंग्स को सपोर्ट करने के लिए एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज डिस्कसिंग एंड ऑल. सो गो एंड रीड इन डिटेल. एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने दे दिया. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टू आर्टिकल्स. India has lost its way in the use of international law. Okay, well won, these two. So in this actually author is, I think, in my personal opinion, is slightly critical of the, I can say, the tone is critical. ठीक है. तो मैं बताता हूँ क्या, despite international law being ruler's law and its Eurocentric character, India did not jettison it at the time of independence. India's constitution makers saw value of international law and thus provided Article 51, etc. So basically saying कि Article 51 जो है वो
can say following international law, India should follow the international law. ये सब mentioned है उसमें, है ना? You should be knowing it. That is what is being mentioned. Then he is saying that India asserted its sovereignty and champions the principle of self-determination in international law, including the key role in First Asian African Bandung Conference, etc. So he is referring to non-aligned movement. Before non-aligned movement, Bandung Conference happened in Indonesia. ठीक है, 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था. उसमें उसी का रिजल्ट में नाम बना और उसी के रिजल्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एटसेट्रा की बात हुई. मींस डीकोलोनाइजेशन, आप समझ सकते हो ना. सो द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट इज इन द इनिशियल ईयर्स वाज डीकोलोनाइजेशन, कि जितने भी जगह कॉलोनीज है जो यूरोपियंस कॉलोनी बना रखे वो छोड़े, आजाद करें लोगों को. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही इज हाईलाइटिंग, दैट द इनिशियल जॉब वाज the Bandung Conference, etc., which resulted into the formation of NAM, was to decolonize the countries, the third world countries, by pressurizing the Western nations that you should leave the country. Other nations, like for example, South Africa at that time was still a colony. Many nations were colonies, etc. Then since those days, India has remained steadfastly committed to UN Charter and always advocated peaceful settlement of international disputes. उसी जमाने से लेके अब तक जो है इंडिया हमेशा यूएन चार्टर को फॉलो करते रहा है और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात किया. यानी जंग से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नेगोशिएट करके, बातचीत करके मसला हल करने की. ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, दैट इंडिया हैज बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेशनल रूल्स, लॉज एंड पीसफुल सेटलमेंट, solving the dispute through peaceful settlement. Then India has played an active role in proposing CCIT, Comprehensive Convention on International Terrorism. That is yet to come. Okay, it is yet to come. So CCIT will define what exactly is terrorism, what are the laws, or what should be the international law against terrorism and all. अभी तक इसको पास नहीं हुआ है. It has not come up yet. ठीक है. Then it is talking about International Solar Alliance also. Now, there was a question, I think last year or last to last year asked in ALET. When we are talking about International Solar Alliance, where is the headquarter of ISA, International Solar Alliance? Your options are New Delhi, Gurugram, New York, Paris. What is the right answer? आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का हेडक्वार्टर कहां है. ये पूछा गया है लास्ट ईयर एज फार एज आई रिमेंबर. व्हाट इज द राइट आंसर? यस, गुड प्रीति, देवादिता, स्तुति, हरिओम, यू ऑल आर राइट. इट्स गुरुग्राम इन हरियाणा. ठीक है, B is the right answer. Yes, Nancy, Sharmist, Sanskriti, all are right. ठीक है, so ये कहा जा रहा है. So that is what he is talking about, International Solar Alliance, etc. So International Solar Alliance come in news again and again. So go and find out who is the Director General, where is the headquarter, है ना, headquarters Gurugram. Then what is the purpose? क्यों बनाया गया है? In which year it was made? कब बनाया गया था? In which, I can say, on the sideline of which important summit this was made? किसके कौन से समिट हुई थी? एक फेमस इंटरनेशनल समिट हुई थी, उसके साइडलाइन में इसको बनाया गया था. गो एंड फाइंड आउट दिस थिंग्स. दिस आर होमवर्क, है ना. So barring a few instances such as suing Pakistan at ICJ in the Kulbhushan Yadav case, India has not used international court to hold Pakistan accountable for breach of international law. तो ये बता रहे हैं कि barring few cases, यानी कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए, जैसे कुलभूषण जाधव का केस छोड़ दिया जाए, तो इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट्स को यूज नहीं किया है पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, यानी पाकिस्तान के एक्शंस को जवाबदेह बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर. सो ओनली इज गिवन द एग्जांपल ऑफ आईसीजे इन विच कुलभूषण यादव केस. सो आई होप यू आर अवेयर, दिस इज वेरी फेमस. इस 2-3 साल पहले काफी न्यूज में था. आईसीजे वर्डिक्ट हाइलाइट्स वर्ल्ड कोर्ट स्टेज कुलभूषण जाधव एग्जीक्यूशन. ठीक है, सो दिस वाज एग्जीक्यूशन वाज ग्रांटेड, आई कैन से पास्ड बाय आई थिंक पाकिस्तान कोर्ट. So India went to the ICJ and International Court of Justice stayed that order. उसको रोक लगा दिया था फांसी को. Grants India consular access, मतलब Indian can say consular access means the Indian officials or his relatives can go and meet, etc. and all. That is what it says. Now, since ICJ is in the news, International Court of Justice, please answer this question. Where is the headquarter of ICJ? The Hague, Washington DC, New York, Paris. What is the right answer? Ajay Mathur DG, yes. Lakshmi, good, very good. Paris Agreement, yes. Sharmistha, right. You are right. It was made on the sideline of Paris Agreement. Correct. Huh? Now answer this question. Question number 5. Where is the headquarter of ICJ? Good, good. Devadita, Hariom, Asmita, Preeti, Lakshmi, Ashi, Gitanshi, you all are right.
The Hague is the right answer. Here is the beautiful Peace Palace building we call Peace Palace building. ठीक है, in The Hague. In which country? कोई बंदा ये बता सकता है कि The Hague कौन सी कंट्री में है ये? In which country this is situated? This is Peace Palace building. This is the office of ICJ, International Court of Justice. ठीक है, तो आप जाकर के go and read about कुलभूषण जाधव केस, थोड़ा सा पढ़िए, few lines, go and read about it, because he has talked about, the author has talked about it, that's why I'm saying so. ठीक है, Netherlands, yes, Preeti Gupta, Sharmistha Kashyap, you all are right. The Hague is actually in Netherlands. It is a city in Netherlands. ठीक है, good. Aditi Asmita Astuti, you all are right. Then he is saying a major reason for India's failure is to effectively employ international law vocabularies is that its foreign service is heavily populated by journalist diplomats. So he is basically criticizing Indian foreign service officer that they are mostly generalist. ठीक है ना, they have some idea of international relations. That is what he is saying. The only section the Ministry of External Affairs that look at international law is legal and treaties division, but this is grossly understaffed. फिर दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि the division, legal and treaties division in a Ministry of External Affairs is grossly understaffed, means there is a shortage of a staff. Where in legal and treaties division of Ministry of External Affairs. That is what the author says. ये author का कहना है, ठीक है. Then further he says one is unsure that the quality of talent that the L&T division is able to attract because there are far greater incentives for international law to join in government as a journalist, diplomat, etc. and all. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि the quality, you can say in short, that in L&T means legal and treatise division in Ministry of External Affairs, the quality of the staff is not that much. That is what he says. ठीक है, तो IFS बनने का लोगों को ज्यादा शौक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस में by qualifying UPSC rather than being the top class lawyers, etc. That is what he says, इनका opinion है, ठीक है. So basically that is what his tone is, in most of the cases critical, you can say, na. So that is what he says. Academically, international law has remained neglected. So he is basically focusing on research on international law in India. So international law, international lawyers को ज्यादा हायर करने का मतलब उनको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है. So he is basically strengthening this idea of international law in detail, ठीक है. Okay, then there was an article on side, यहाँ पर जो था आपने देखा होगा ये वाला, this one, well won, right? So it's Sri Lanka and Pakistan final match. So it's about sports, है ना. So I hope you are aware that Sri Lanka has won it. देखो एक चीज जो हम लोग सीख सकते हैं, we can learn from Sri Lanka is what? Even because of so many economic crises, it won it. ठीक है, तो चाहे आपके circumstances कितने भी adverse हो, आप still win कर सकते हो, जीत सकते हो, right? So you have CLAT on 18 December. You have a lot of problems. आपके घर में बहुत सारी problem होगी, हजार तरह की परेशानी होगी, but still you can win. That is what this result says, है ना. So that is what we are discussing. Yes, everyone please press the like button, comment, share this video, subscribe to our channel also. Now let's talk about this one op-ed page, great G20 power, great responsibility. Now, so that is what the author is talking about. So before that, there's a question for you. G20 2023 summit is going to happen where? Indonesia, India, USA, Uzbekistan. What is the right answer? Waiting for your answers. Everyone please press the like button, share this video, subscribe to our channel. G20 2023 समिट कहां होगा? Good, Devadita, Stuti, Hariom, Preeti, you all are right. Some people have said A. नहीं, see, please check it. That is why I always say, read the question carefully. मैं 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है? And 2022 का इंडोनेशिया में होगा ना? So please be careful. So B is the right answer here, हाँ. So that is what in this article is talking about actually. कि September will be a hectic month for India's diplomatic calendar. September, October में खास के a lot of meetings are going to happen, है ना? On 5 and 6 September, a senior officers meeting was held of Quad meeting हुआ एक, ठीक है? Then the author is talking about, here you can see that on 15-16 September, Samarkand में, Uzbekistan में Shanghai Cooperation Organization meeting is there. So where all the you can say head of the states of Shanghai Cooperation Organization members will come. जो SCO के head of the states हैं, चाइना के, रशिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के सारे head of the states, head of the government जाएंगे वहाँ, है ना? So that is what is being discussed. ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना के head पहली बार मिलेंगे 2020 का जो LAC वाला इश्यू हुआ था उसके बाद, ठीक है? So Indian Prime Minister Modi and PM Modi and Chinese President Xi Jinping will be meeting for the first time since
that Galwan Valley clashes and all. Okay, that is what it says. Here is India, here is Uzbekistan, यहाँ पे है ना Samarkand, where they will be meeting. Okay. Yes, then of course in November we'll be having a G20 summit in Indonesia. Then after ये सब बातें हो रही, ठीक है. Then after that they have explained in detail the things which will be India's opportunity, क्या क्या हो सकता है. So it's mostly futuristic. तो अभी चीजें होने दो, तब हम लोग ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. So that is why I'm not going in detail in these articles. So अभी इसलिए कि अभी बहुत सारी चीजें इवॉल्व होके आई नहीं है. अभी जब समिट हो जाएगा, उससे कुछ आउटपुट निकलेगा, then we'll be discussing more, है ना, after the output. So in a world affected by pandemic, Ukraine conflict, etc. बहुत सारी चीजें हैं. पैंडेमिक अभी हुआ है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, फिर महंगाई, स्टैगफ्लेशन, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना. That needs to be discussed. India can take cue from Indonesia's presidency of how it is managing group which is divided, etc. तो ये बता रहे हैं कि ये ग्रुप डीपली डिवाइडेड है G20 का, है ना. एक साइड यूएसए का ग्रुपिंग है, इधर चाइना रशिया एक साइड है ना. तो वेस्टर्न G7 वाले ग्रुपिंग इधर हैं. सो हाउ टू हैंडल दैट? यस, both sides have different opinions. On one hand there is NATO is led by US, and G7 partners etc is there. Then on the other side you will find China and Russia, है ना. दूसरे पक्ष में चाइना रशिया, उनका ओपिनियन अलग है. तो स्पेशली नेक्स्ट ईयर जब इंडिया विल बी द हेड, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो इशू एंड ऑल, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग. सो इट्स मोस्टली फ्यूचरिस्टिक है, कैसे कैसे करना चाहिए. जब चीजें इवॉल्व होगी, जैसे SCO समिट होगा, रीड दोस थिंग्स एंड देन यू शुड बी यू कैन से आंसरिंग अकॉर्डिंगली, है ना. देन सिमिलरली G20 समिट होगा नवंबर में, उसके बाद नेक्स्ट समय दिसंबर में. सो व्हाटएवर विल बी हैपनिंग इन नवंबर, फॉलो इट, रीड द न्यूज़पेपर, देन यू विल बी नोइंग मोर अबाउट इट. देन एक आर्टिकल थी पेज नंबर 10 में, accidents related. Although we have discussed in detail, but let me discuss in short. ये सब मैंने डिस्कस कराया है पहले. You can see it here. So yellow वाला है number of deaths, related deaths, है ना. Yellow वाला है. Then number of road accidents blue वाला है. Here you can see this one. And number of injured ये है. तो आप देखो अगर deaths की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, yellow ones, है ना. That is what he is talking about, है ना. So that is what. Then state wise road accident, one of the highest you will find in Uttar Pradesh. So city wise अगर आप देखोगे, so Delhi का बहुत ज्यादा 1172 is there. Okay, so that is what is talking about. Then gender wise it is saying कि males ज्यादा of course accident victim बनते हैं. Why? Because mostly because of two wheelers, 44%. That is what he is talking about. Reason क्या होता है? Speeding सबसे बड़ा reason होता है. यानी जितना स्पीड लिमिट क्रॉस किया जा रहा है, 40 km/h लिखा है, 100 पे चला रहे हैं वहां पर. Okay, so that is one of the reason that is being highlighted. बेसिकली आप देखोगे 18 से, इस रीजन में 18 से 45 की उम्र में ज्यादा होता है ना. यूथ्स ड्राइविंग मोटरसाइकिल, स्पेशली टू व्हीलर्स, स्पीडिंग अप, बहुत तेजी से चलाते हैं, इज द कॉज फॉर एक्सीडेंट. तो यूथ हैं, उनका एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा होता है, तेज गाड़ी चलाते हैं, खासकर मोटरसाइकिल. एंड इफ यू सी हियर इट इज नेशनल हाईवेज 2 या 3% का प्राइस करता है पूरे रोड्स का, बट स्टिल 34% एक्सीडेंट होता है. क्यों? स्पीडिंग. क्योंकि हाईवे बहुत लंबी लंबी होती है, उसमें गाड़ी बहुत तेज चलती है, तो चांसेस ऑफ कोर्स ज्यादा एक्सीडेंट का. इन सिटी में तो इतना स्पेस ही नहीं होता है ना गाड़ी तेज चलाने का. सो दैट इज व्हाट इट सेज. देन द नेक्स्ट इज पेज नंबर 12. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अप्रूव्स नेम फॉर अपॉइंटमेंट इन 3 हाई कोर्ट. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन हाई कोर्ट, इन कॉलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? हाँ, पटना एडिशन में नहीं आता है शुभम. यस, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है. यस, ऑन वेबसाइट यू विल फाइंड. सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अप्रूव्स नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट इन 3 हाई कोर्ट जजेस. सो सुप्रीम कोर्ट की कितनी मेंबर कॉलेजियम होती है हाई कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए? कैन एनीवन टेल मी? अगर नहीं पता है तो इट्स अ होमवर्क. गो एंड फाइंड आउट. इट्स अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम टू अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस? 5, 9. अरे नहीं, नाइदर 5 नॉर 9. हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कितने मेंबर कॉलेजियम होती है? गो एंड फाइंड आउट. इट्स अ होमवर्क. हमको करेक्ट आंसर नहीं मिला है. आई हैवंट गॉट द राइट आंसर. ओके, गो एंड फाइंड आउट. द नेक्स्ट इज, कुछ तो होमवर्क देना चाहिए ना. हाँ, इंडिया रेजेस श्रीलंका तमिल इशू इन यूनाइटेड नेशन. ओके, now what is this? I hope you are aware that majority of the population in Sri Lanka are Sinhalese, and there has been some discriminatory laws against Tamils, the minorities. If you see the political science book, I think, I don't remember whether it's class 9th or 10th, इसमें पूरा एक chapter है majoritarianism पर. Have you seen that? How many of you have seen?
Yes, 3 is the right answer. Devadita, Ashi, BS, you all are right. 3 member collegium होती है, ठीक है, go and find out. खैर, so basically it was in class 10th I guess, है ना. तो इसमें वही बात हो रही है. So that is what is talking about. India on Monday said that lack of measurable progress in Sri Lanka's promised political solution. तो इन्हें जो प्रॉमिस किया गया था तमिल्स को उस पर पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है. So India has raised this in United Nations and all. Okay. So that is what it says. It is talking about 13th constitutional amendment. इसको पढ़िएगा थोड़ा. So 13th constitutional amendment gives some powers actually. ठीक है. Here it is. Go and read about 13th amendment of Sri Lanka. That's important. Okay. So it gives some powers to provinces where Tamils can have some autonomy and all. So it has not been implemented successfully. पूरी तरह इसको implement नहीं किया गया. That is what is being discussed. Okay, India has extended nearly $4 billion crucial assistance this year, but has not made any public remark on the island's economic choice so far. ठीक है, तो अब तक इंडिया ने लगभग $4 बिलियन का इकोनॉमिक एड दिया है श्रीलंका को. सो दैट्स अ बिग थिंग, यू शुड बी नोइंग इट, है ना. दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. अफ्रीकन चीता विल बी ब्रॉट इन एक्स व्हिच इज सिचुएटेड इन वाई. व्हाट आर एक्स एंड वाई? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अफ्रीकन चीता को इस नेशनल पार्क में लाया जाएगा, वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? Yes, Sonal Upadhyay has answered it. Very good. Stuti Mishra, right. D is the right answer. Some people are saying B. वो इसलिए बोल रहे हैं कूनू पालपुर वाइल्ड सेंचुरी इज नॉट इन यूपी, इट्स इन मध्य प्रदेश. ठीक है. सो बी कुड हैव बीन द आंसर इफ इंस्टेड ऑफ यूपी एमपी वाज रिटन. ठीक है. बी आंसर होना चाहिए था अगर यूपी की जगह एमपी लिखा होता है. कूनू पालपुर सेंचुरी मध्य प्रदेश में. सो डी इज द राइट आंसर. हाँ, यस, स्तुति मिश्रा, राइट. सो ऑन पीएम्स बर्थडे कूनू नेशनल पार्क विल सी 8 अफ्रीकन चीताज. ठीक है, on 17th September. So go and read more about it. इसको पढ़िए जाके, कई बार हम लोग डिस्कस करा चुके हैं. Then this we have discussed yesterday's class. Please go and watch yesterday's class. We have discussed in detail about adoption rules. कल के क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस कराया. Then this we have discussed also in yesterday's class. इसमें यही बता रहे हैं कि खार्किव में more gains किया यूक्रेन ने. So that is what we have discussed, that here is Ukraine, here is Russia. So this is Kharkiv region. So now Ukraine army is pushing Russian army back. पीछे की तरफ ढकेल रही है और यूक्रेन आर्मी एक्सपैंड कर रही है वापस. That is what is being discussed. अच्छा, एक और चीज है लास्ट में. न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन अनाउंस्ड. आज किसी ने मॉर्निंग में न्यूज देखा है? Who is that person? Who will be the new attorney general of India? Anyone? Because you all are law students, so you should be knowing it. आज मॉर्निंग में मैंने ये न्यूज देखा कि न्यूज आ रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली he will be the new attorney general. Most probably एक न्यूज आई. Who is that person? Anyone? So the right answer is actually Mr. Mukul Rohatgi to return as attorney general on October 1, says sources. So sources के हिसाब से ये न्यूज आई थी कि शायद मुकुल रोहतगी जो है फिर दोबारा 1 अक्टूबर से अटॉर्नी जनरल इंडिया के बन जाए. ठीक है, नहीं पढ़ा किसी ने? हाँ, तो अभी देखो, चूंकि सोर्सेस से हवाले से खबर थी. सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग इट कि whether this news is true, but मैंने देखा बहुत जगह आर्टिकल्स में था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, in different places it was being mentioned. So let's see whether this news is true or not. Keep on following it because KK Venugopal is supposed to retire soon, है ना? You should be knowing it. So these are our CLAT 2022 students. This is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.